फर्स्ट ईयर की जो इंग्लिश है उसका एक चैप्टर है माय बैंक अकाउंट, जो स्टेफन लिकुट ने लिखा है। तो उसके एमसीक्यूज ऑनलाइन करते हैं आज। गूगल क्रोम ओपन करना है और उस पर लिखना है आदमजी ब्लॉग स्पॉट। उसके बाद वेबसाइट को ओपन कर लेना है और यहाँ होम लिखा है जहाँ दिख रहा है वहाँ क्लिक करना है और क्लास 11 पे क्लिक करना है। उसके बाद ये इंग्लिश 11th लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ इंग्लिश 11 ऑनलाइन एमसीक्यूज 4th नंबर पे आ रहा है, ऑनलाइन एमसीक्यूज टेस्ट। इस पर क्लिक कर देंगे, ये ऐड आएगा, इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, वेबसाइट लोड हो रही है। अब नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके और पेज नंबर जो 4 है ना, इस पर क्लिक कर देंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिख जाएगा माय बैंक अकाउंट ऑनलाइन एमसीक्यूज क्लास फर्स्ट ईयर। यहाँ आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा 41 एमसीक्यूज है। अब इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। माय बैंक अकाउंट इज़ रिटन बाय, ये लिखा है स्टीफन लिकुक ने, और नेक्स्ट कर देते हैं। स्टीफन लिकुक वाज अ प्रोफेसर ऑफ डैश एट एमसी गिल यूनिवर्सिटी इन मॉन्ट्रियल कनाडा। तो वो पॉलिटिकल साइंस के जो है वो प्रोफेसर थे। व्हेन द ऑथर वेंट इनटू द बैंक ही गॉट फ्राइटेंड, वो खौफजदा हो गया था। द क्लर्क द डैश द साइट ऑफ मनी फ्राइटेंड द आउथर, आउथर यानी लिखने वाला, मुसन्निफ। द मोमेंट द आउथर पास थ्रू द डोर्स ऑफ अ बैंक ही बिकेम एन irresponsible fool. The author's salary had been raised dash a month, $50. The author felt that dash was the only right place for the money. So bank. The author walked into the bank unsteadily. The author went up to a place marked accountant. According to the author, the accountant was a tall, cool devil. Can I see the manager? Said the author. I don't know why I said alone. The manager was a calm and dash man, serious. The author held his $56 pressed together in a ball in his pocket. The manager looked at the author with some anxiety. The manager turned in the lock, the key. We both sat down and looked each other. The manager took the author for a detective. The manager thought the author was a dash of Baron Rothschild. यहाँ आएगा son. The author intended to place the sum of dash in the bank now. $56 जो है वो डिपॉजिट कराना चाहता था. The author intended to place a sum of dash a month regularly in the bank. वो $60 $50 जो है वो मंथली डिपॉजिट करवाना चाहता था. The manager called dash to the accountant. अकाउंटेंट का नाम था मिस्टर मॉन्टगोमेरी. कम आउट सेड द मैनेजर, ये इसने कहा था ऑथर से, मैनेजर ने. When the author was speaking to the accountant, his face was terribly pale, जर्द हो गया था. Mr. Montgomery gave the author's money to another clerk. The clerk made the author write the sum on a bit of paper. The clerk moved the author sign his name in a book. The bank seemed to swim before the author's eyes. The author wanted to draw a check. The author's idea was to draw out dash of for its present use, $6. Some gave the author a checkbook. The people in the bank seemed to think that the author was a man who owned millions of dollars. The people in the bank thought that the author was not feeling very well. The author realized that he had written $56 instead of 6. The author made a miserable attempt to look like a moon with a cheerful quick temper. Temper मिजाज को कहते हैं. The clerk prepared to pay the money. The clerk gave the author $50 note.
और उसके बाद उसने क्लर्क ने उसको दिया था $6 का नोट दिया था। द author heard the sound of roar of laughter. The author kept his money in his pocket. और वो author अपनी सेविंग कहाँ रखता था? सिल्वर डॉलर्स इन अ शॉप यानी मोज़ों में। ये 100% क्लियर हो गया।